Hello dear students, welcome to Infinity Learn. This is Dr. Priyanka and today we are going to solve all the previous year questions from the topic Chemical Control and Integration. Are you all ready for today's session? Tell me in the chat fast. आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है like always. Chemical Control and Integration जो चैप्टर है, it is a small and the last chapter of your class 11th, but trust me it is very important chapter क्योंकि हर साल 3 questions जो है इस chapter से पूछे जाते हैं. So hope you all are all set with your notes and everything, and let's start our today's session. But before starting, don't forget to subscribe our YouTube channel. अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please make sure you subscribe our channel ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती जाए, कितने सेशंस हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब आप सब्सक्राइब करोगे इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. वहाँ पर भी जो है हर सेशन के बाद में पीडीएफ्स दिए जाते हैं, आपको शेयर किए जाते हैं. कोई भी अपकमिंग सेशन होता है उसकी लिंक शेयर की जाती है, तो यू वोंट मिस इवन अ सिंगल सेशन. So let's see what is the first question of today's session. Okay. So first question on your screen, GnRH, Gonadotropin releasing hormone. GnRH is Gonadotropin releasing hormone, right? This GnRH is released from hypothalamus. ये जो GnRH है Gonadotropin releasing hormone, ये hormone release होता है from hypothalamus. Now the question is, this hypothalamic hormone needed in the reproduction acts on. तो ये GnRH hormone कौन से hormones पे act करेगा? You have 4 options. Anterior pituitary gland and stimulate secretion of LH and FSH. LH stands for luteinizing hormone, FSH stands for follicle stimulating hormone, okay? Posterior pituitary gland and stimulate secretion of oxytocin and FSH. Posterior pituitary gland and stimulate secretion of LH and relaxin. Anterior pituitary gland and stimulate secretion of LH and oxytocin. And this question was asked in NEET 2017. Easy? अब बताओ GnRH which is released from hypothalamus, it will act obviously on the gonadotropin hormone. Can you see here? Gn लिखा है, Gn stands for gonadotropin, RH stands for releasing hormone. So Gn will stand for gonadotropin. Okay, gonadotropin. And what are the gonadotropins? कौन से hormones होते हैं जिसको हम बोलते हैं gonadotropin? Tell me. Gonadotropin are another name of LH and FSH. Luteinizing hormone and follicle stimulating hormone are known as gonadotropin, जो होता है release from anterior pituitary. So your correct option will be, let's see, A. So anterior pituitary से जो LH and FSH hormone release होता है, उसको रिलीज करवाने का काम करता है GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, which is released from hypothalamus. And another important point, master of master gland किसे बोलते हैं? Master of master gland किसे बोलते हैं? That you all know. This is the pituitary gland which is known as master gland, right? Now ये master का भी master कौन है? Hypothalamus. So hypothalamus control our pituitary gland as a master of master gland. तो pituitary gland master gland हो गया, master of master gland हो गया hypothalamus. Hypothalamus से जो hormones निकलते हैं, for example gonadotropin releasing hormone, it will stimulate the secretion of hormones from the master gland. Okay, everybody? So master of master gland कौन हो गया? Hypothalamus. चलो. Now let's move on to our next question. Tell me fast, what will be the answer of this question? Hypersecretion of growth hormones in adults does not cause further increase in height because
growth hormone, when its level is increased in children, that condition is known as gigantism, right? When the secretion of growth hormone increases in adult, that is known as acromegaly. But acromegaly mein there is only lengthening of the extremities. Height does not increase, which increases in gigantism, right? Gigantism mein to height बढ़ जाती है. Not in acromegaly. Adult में अगर growth hormone का secretion ज़्यादा हो रहा है तो height नहीं बढ़ेगी. क्यों नहीं बढ़ेगी? You are going to tell me. We have 4 options and this question was asked in NEET 2017. So let's see what are the 4 options. Epiphyseal plate close after adolescence. Bones lose their sensitivity to grow hormones in adults. Muscle fibers do not grow in size after birth. Growth hormones become inactive in adults. The answer is very simple. This epiphyseal plate, which leads to lengthening of your bone, this epiphyseal plate after adolescence will not be sensitive to growth hormone. So the correct option will be A. Epiphyseal plate जो actually grow करता है bone का, वो epiphyseal plate close हो जाता है in long bones. That's why there will not be any further increase in the height even if the growth hormone is increased in adults. Okay, dear students? So that was it. Let's move on to our next question, and our next question is a temporary endocrine gland. What are endocrine glands? Endocrine glands are those glands which do not have duct. They are also known as ductless glands, right? Now ये जो ductless glands है, duct नहीं है तो ये अपना secretion कैसे pour करते हैं? So they pour their secretions directly into the blood or lymph, right? So they don't have duct. Now here in NEET 2017, the question was asked on temporary endocrine gland. ऐसा endocrine gland है जो temporarily present है और वो उस time पे ही सिर्फ hormone release कर रहा है. Let's say you have 4 options. And yes, this is a very simple question. I will agree with you all. Corpus cardiacum, corpus luteum, corpus allatum and pineal gland. Temporary endocrine gland पूछा है. So obviously it will be corpus luteum. Now what is a corpus luteum? After ovulation, ovulation के बाद the remaining graphene follicles convert into a structure known as corpus luteum. Okay, so after ovulation, okay, after ovulation what will happen? This structure after 14th day will form corpus luteum. Now why it is known as corpus luteum? It is known as corpus luteum because it consists of yellow pigments. Okay, this is known as corpus luteum. Luteum because of lutein pigment which is of yellow color. Now this corpus luteum will release progesterone, right? And why it is temporary? It is temporary because it will degenerate with time. Now this corpus luteum will not only release progesterone, प्रोजेस्टेरॉन तो रिलीज करता है हाई अमाउंट में, बट थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है. तो आई विल राइट इट हियर, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन in large amount, and also it will release estrogen. It will also release estrogen. And since this progesterone is important for maintaining the pregnancy, अगर fertilization नहीं हुआ egg का and sperm का, what will happen? This corpus luteum will slowly degenerate. Okay? So that's why it is known as a temporary endocrine organ or gland. Okay. Now let's move on to our next question. So the correct option for this question was B. Graves' disease is caused due to. You have 4 options. NEET 2016 का question है.
hyposecretion of thyroid gland, hypersecretion of thyroid gland, hyposecretion of adrenal gland and hypersecretion of adrenal gland. 4 ऑप्शन है आपके पास and correct option will be hypersecretion of thyroid gland. So what is a Graves' disease? Graves' disease is due to remember dear students, hyperthyroidism के वजह से होता है Graves' disease. Okay, so the correct option for this question will be hypersecretion of thyroid gland. Next question, name a peptide hormone. Peptide hormone, that means proteinaceous hormone, which will act mainly on hepatocytes. Hepatocytes are the cells of liver. Hepat is related to liver. Adipocytes related to fat cells, and enhances cellular glucose uptake and utilization. Now this question is not only asked in 2016 but many times this question is asked. यहाँ तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा हार्मोन है जो हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा और उनके ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा. You have 4 options here: इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन. और भी अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है अलग अलग टाइम पे नीट एग्जाम में. यहां पर द करेक्ट ऑप्शन इज इंसुलिन. Now we know insulin is released from the beta cells of pancreas, and what is the function of insulin? It helps in reducing the blood glucose level. And how it is going to reduce the blood glucose level? By increasing the uptake of glucose by the cells. So this insulin will act on adipocytes and hepatocytes and will increase the uptake of glucose, because of which ultimately the blood glucose level will reduce. Okay? So the correct option for this question is insulin. Let's move on to our next question. The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. Yes, a very good conceptual question. Posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. Why? Because they do not synthesize and secrete their own hormones. No. They secrete the hormones that are produced by hypothalamus and is stored there. So हमारा posterior pituitary gland कौन सा hormone release करता है? It releases hormones, 2 hormones. कौन सा? Oxytocin and ADH, which is also known as vasopressin. So our posterior pituitary gland releases 2 hormones, right? One is oxytocin and another one is ADH, which is also known as vasopressin. But these hormones are not synthesized in posterior pituitary, rather they are synthesized in hypothalamus. So hypothalamus में बनता है ये दोनों हार्मोन, स्टोर होता है posterior pituitary में and then वहां से रिलीज होता है. So that's why our posterior pituitary gland is not a true endocrine gland. Is it clear, dear students? Okay. So the correct option will be B. It only stores and releases hormones. This gland is not synthesizing any hormone. What is the function of oxytocin? Oxytocin will help in parturition. Also, this oxytocin will also help in, it is also known as milk letdown hormone, isn't it? So it will help in secretion of milk as well. Formation of milk is due to prolactin, right? But secretion or ejection of milk is due to oxytocin. Remember this fact. Again, this is one important question of NEET.
Another important question of NEET is, what is another name of ADH? And what is the function of ADH? ADH, antidiuretic hormone, which is also known as vasopressin, it will help in reabsorption of water from DCT and collecting duct. Okay. Apart from this, as you can see, there is another name such as vasopressin. Vaso means related to blood vessels. So it will help in contraction of blood vessels as well. That means there will be increase in blood pressure. Okay. Now let's move on to our next question. Which of the following pairs of hormones are not, underline करेंगे not को, not antagonist, having opposite effect to each other. Antagonist का मतलब होता है those hormones that will act in opposite way. You have 4 options here. This question was asked in NEET 2016. Aldosterone and ANF, relaxin and inhibin, parathormone and calcitonin, insulin and glucagon. Let's see. They are asking not antagonist to one another. Now we'll start with insulin and glucagon. What is the function of insulin? Insulin will reduce blood glucose level. Glucagon will increase blood glucose level. So they are antagonists, right? Parathormone and calcitonin. Calcitonin will increase blood calcium level. Parathormone will reduce blood calcium level. Now we will come to aldosterone and ANF directly. Aldosterone will cause increase in blood pressure. How? Aldosterone will cause reabsorption of water and sodium ions from DCT and collecting duct. And ANF, as the name suggests, atrial natriuretic factor. This ANF or atrial natriuretic factor will lead to excretion of sodium ions in the urine. Urine में sodium ions जा रहा है, water will follow. So पानी बाहर, sodium बाहर, blood pressure कम हो गया हमारे body में, right? Okay? So your blood pressure will reduce. So they are also antagonist. What is not antagonist is relaxin and inhibin. Okay? So correct option for this question is B. Let's move on to our next question. The amino acid tryptophan is the precursor for the synthesis of. क्या काम होता है tryptophan का? Tryptophan कहाँ present होता है tryptophan? It is present in milk. That's why it is said now while you are going to sleep, please have a glass of milk. क्योंकि milk में होता है tryptophan. Tryptophan बनाने में help करता है melatonin and serotonin, and this was asked in NEET 2016. Okay, so किसमें help करेगा? Sorry, tryptophan क्या बनाएगा? Tryptophan बनाता है melatonin, which is also known as sleep-inducing hormone, isn't it? So melatonin and serotonin बनता है with the help of amino acid tryptophan in your body. Hope this was helpful. And please don't forget to like this session, share this session and subscribe our Infinity Learn NEET channel if you haven't subscribed it yet. Okay. Regular I come with PYQs, previous year questions of all the topics of zoology. We have already covered some topics. In the future sessions, we will be covering all the other topics that are left. So basically 11th and 12th दोनों ही classes के previous year questions zoology के हम cover कर लेंगे in this session. Okay. So let's start with our next question. Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism? Not. Underline कर ले, circle कर लेना हमेशा. Not. बताया मैंने बार बार. Insulin 2015 का question है. Glucagon, cortisone, aldosterone. कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है? इंसुलिन है,
ग्लूकेगॉन है, कॉर्टिसोन है, एल्डोस्टेरॉन इज द वन जो कि नहीं है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन? जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन में फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कौन हेल्प करता है? एल्डोस्टेरॉन. दैट विल इंक्रीज योर blood pressure eventually with the help of RAS mechanism, renin, angiotensin, aldosterone system के through your blood pressure will increase. Now let's move on to our next question. Which one of the following hormones, though synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland? तो अगर आपको पता है मास्टर ग्लैंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो पहले तो हम देखते हैं मास्टर ग्लैंड कौन सा है. मास्टर ग्लैंड कौन सा है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड. और अभी हमने डिस्कस किया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा है बच्चों? हाइपोथैलेमस. सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, इसका जो पोस्टीरियर लोब है वहां पर ADH and vasopressin, ADH और vasopressin together with oxytocin is stored. So ये pituitary gland ADH को और oxytocin को बना नहीं रहा है, सिर्फ रिलीज कर रहा है. बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस. तो यहां पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? ADH. Is it clear? चलो, now let's move on to our next question. बहुत ही अच्छे. ये चैप्टर छोटा है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट जस्ट मग अप, राइट? अ केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स. 2015 का क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव 4 ऑप्शंस: एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन. So obviously your answer is going to be epinephrine. Epinephrine का दूसरा नाम क्या है बच्चों? Adrenaline. Okay? Epinephrine is also known as adrenaline. Adrenaline or epinephrine. Not only this will act as a hormone, it also acts as a neurotransmitter. Okay? So your correct option will be A. Now let's move on to our next question. Identify the hormone with its correct matching of source and function. You have oxytocin here. Oxytocin posterior pituitary से release होगा, growth and maintenance of mammary glands में help करेगा. Melatonin from pineal gland regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle. Progesterone from corpus luteum, stimulation of growth and activities of female secondary sex organs. Atrial natriuretic factor, which is also known as ANF, ventricular walls, increases the blood pressure. And this question was asked in the year 2014. चलो देखते हैं. Oxytocin release तो होता है posterior pituitary से, yes, but it does not help in growth and maintenance of mammary glands. No. Oxytocin क्या करता है? It helps in milk ejection. It also helps in parturition, that is childbirth. So this is not true. Melatonin, a hormone that is released from pineal gland, correct. Regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle, absolutely correct. So ये है हमारा correct option. आपका circadian rhythm, sleep-wake cycle is regulated by this melatonin hormone. Progesterone, yes, it is released from corpus luteum, but it does not stimulate the growth and activities of female secondary sex organ. This is done by estrogen. Okay? Atrial natriuretic factor, atria से release होता है, ना कि ventricle से, and it helps in excretion of sodium in the urine that will lead to decrease in blood pressure. यहाँ पे लिखा है increase in blood pressure, तो ये गलत हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका? B. Is it clear, dear students? Right? This is how you are going to solve your questions in NEET.
questions will be simple, but they may be tricky. Okay, and yes, increase your reading speed as well, so that ultimately you will save time during your NEET exam. Fight or flight reactions cause activities of fight or flight reactions किसके एक्टिवेशन की वजह से होता है? हार्मोन आप सभी को पता है, दैट हार्मोन इज एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल मेड्यूला से. तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए? 2014 का क्वेश्चन है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होगा ये हार्मोन एड्रेनालिन, एंड टुगेदर विथ noradrenaline. Adrenaline is also known as epinephrine and noradrenaline is also known as norepinephrine. Okay, so adrenal cortex से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? adrenal cortex से रिलीज होते हैं mineralocorticoid, for example aldosterone, glucocorticoids, for example cortisol, and sex corticoids, for example estrogen and progesterone. Okay, so these rest of the options देखते हैं. The parathyroid gland leading to increased metabolic rate, no. The kidney leading to suppression of renin angiotensin aldosterone pathway, no. The pancreas leading to a reduction in the blood sugar level, no. The correct option will be adrenaline, noradrenaline, which is released from adrenal medulla. Okay, now let's move on to our next question. A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient, and abnormal skin. This is the result of, okay, a baby is born and us baby mein what is there? Stunted growth. Growth is not proper, IQ is low, and skin is also abnormal. So ऐसा क्यों हुआ? Let's see, we have 4 options here, and this question was asked in NEET 2013. Now can you see this is not a direct question. ये direct question नहीं है. This is an indirect question. ये एक indirect question है, right? इन्होंने directly नहीं पूछा है कि ये symptoms है, बताओ what will be the disease. Now क्यों हुआ ऐसा? You have 4 options: cancer of the thyroid gland, over secretion of pars distalis, deficiency of iodine in the diet, and low secretion of growth hormone. Now this is, all these symptoms are symptoms of what? It is due to deficiency of iodine in diet. Whenever there is deficiency of iodine in diet, it will lead to goiter, right? Iodine का deficiency है, it will lead to hypothyroidism. So this is an example of hypothyroidism in children. Okay, so hypothyroidism in children. और ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होगा? क्योंकि मदर के डाइट में आयोडीन का क्वांटिटी जो है वो कम है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट in relation to the endocrine system? You have 4 options and this question was asked in 2013. तो क्या आपको पता करना है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Non-nutrient chemicals produced by the body in trace amount that act as intercellular messenger are known as hormones. ये तो NCERT का लाइन है. This is the definition of your hormone. हार्मोन का डेफिनेशन है ये, NCERT का लाइन है as it is. पूछ लिया देखो नीट में 2013 में. बाकी के ऑप्शंस पढ़ते हैं. Releasing and inhibitory hormones are produced by pituitary gland. No, ये तो master of master gland produce करता है. That means hypothalamus. Adenohypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus. No. Organs कौन होता है? Posterior pituitary gland.
Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney and liver do not produce any hormones. No, they produce hormones. GIT hormones are there, right? So the correct option will be obviously A. So this is the definition of hormones. So what are hormones? These are non-nutrient chemicals जो हमारे बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स. हर सेल के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ये हमारे हार्मोन्स, राइट? चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉरएपिनेफ्रिन, जिसका दूसरा नाम है नॉर एड्रीनलिन, ये नॉर एड्रीनलिन इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स, रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इंक्रीजेस द हार्ट रेट और डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ये चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो आपको बताना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2013. लेट्स रीड. 1 and 3rd, 2nd and 3rd, 2nd and 4th and 1 and 4th. So let's talk about sympathetic fibers first. The correct option will be A. Sympathetic fibers will release norepinephrine or epinephrine. Here it is written in the second statement, is released by parasympathetic fibers. This is wrong. We can relate. We have seen. What is the function of sympathetic fibers? Sympathetic fibers will increase the activity of heart rate बढ़ाएगा, blood pressure बढ़ाएगा, right? So sympathetic and also norepinephrine will increase the heart rate and blood pressure, isn't it? ये हमें पता है, तो we can relate easily कि sympathetic fibers जो है वो release करेंगे norepinephrine as a neurotransmitter. अभी हमने पढ़ा it will obviously increase the heart rate. It will increase the heart rate. Norepinephrine will increase the heart rate. But it will also increase the blood pressure. It will not decrease. So correct option हो गया हमारा A, statement 1 and 3. Isn't it easy? Now let's move on to our next question. Which of the following represents the action of insulin? 4 options we have here. 2013 का क्वेश्चन है, इंसुलिन के एक्शंस पूछे हैं. इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकेगॉन प्रोडक्शन. इंसुलिन का काम तो ग्लूकोज के लेवल को कम करना होता है, ना कि बढ़ाना, राइट? डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन. हाँ, डिक्रीज तो करता है और सेल्यूलर अपटेक भी बढ़ाता है एंड ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है, राइट? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज तो करवाता है इंसुलिन, बट उसके वजह से ना ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग. इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय हाइड्रोलाइजिंग ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में बढ़ेगा. So this is wrong. So the correct option for this question is option B. Hope this is clear. Okay, students. Now let's move on to our next question. A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of the opening of the door. जैसे एक आदमी एक रूम में एंटर करता है, दरवाजा खोलता है, वहीं पे उसको स्नेक दिख जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा. Which one of the following is likely to happen? क्या होगा? Sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal medulla. परफेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं. बट आपको ऐसा नहीं करना है. जब भी आप एग्जाम में जाओ, मेक श्योर आप चारों ऑप्शंस पढ़ो एंड फिर मार्क करो करेक्ट ऑप्शन को. अदरवाइज जैसे हमने किया, पहला स्टेटमेंट पढ़ के उसको मार्क कर दिया, बाकी के स्टेटमेंट्स हमने पढ़े ही नहीं. हो सकता है नीचे लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, हो सकता है, राइट? देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है. Neurotransmitters diffuse rapidly across the cleft and transmit a nerve impulse. Hypothalamus activates the parasympathetic division of brain. Sympathetic nervous system is activated, releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal cortex.
एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन तो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ना कि कॉर्टेक्स से। तो यस, करेक्ट ऑप्शन यहां तो ए ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs of hormones are the examples of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it? क्या पूछा है इन्होंने? एक सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है सेल का, कि पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन होगा जो सेल के अंदर तक चला जाएगा और अंदर जो रिसेप्टर्स है ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उससे बाइंड करेगा। तो पहले तो ये समझो, आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, इट विल, यहां से सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स ही पास हो सकते हैं। जो भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ओके, प्रोटीनेशियस हार्मोन उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, राइट। सो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर से बाइंड करने वाला हार्मोन सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होना चाहिए, एंड दैट लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन is cortisol and testosterone. This question was asked in 2012. तो अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल के अंदर जाके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो रिसेप्टर्स अंदर प्रेजेंट है सेल के उससे बाइंड करेगा, तो आपका आंसर होगा स्टेरॉइड हार्मोन्स या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। यहां पर वो ऑप्शन था कॉर्टिसोल एंड testosterone. Okay, dear students, right? So correct option here was D. Now one more question for you all. The 24 hours diurnal rhythm of our body, such as the sleep-wake cycle, is regulated by which hormone? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके बॉडी का सर्केडियन रिदम, आपके बॉडी का स्लीप वेक साइकिल कौन सा हार्मोन जो इफेक्ट करता है या रेगुलेट करता है? इज इट कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन और मेलाटोनिन? अभी हमने देखा, सोने से पहले बोलते हैं दूध पी के जाओ, दूध में होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन बनाता है मेलाटोनिन, राइट, एंड मेलाटोनिन जो है सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से। ये पूरे स्टेटमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नीट के। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, विच इज melatonin. Okay, next question. Injury to adrenal cortex. इंज्यूरी हुई है, कहां पर हुई है? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। Is not likely to affect the secretion of which of the following? एड्रीनल कॉर्टेक्स में अगर इंजुरी हुई है तो कौन से हार्मोन के सिक्रीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चार ऑप्शन है, दिखता है। एल्डोस्टेरॉन, ये तो कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। बोथ एड्रोस्टेनिडोन एंड डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, ये भी कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है। एड्रीनलिन, हाँ, ये जो है हमारे एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है, ये हमारे एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होता है। कॉर्टिसोल जो है ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये भी कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। सो एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होने वाला हार्मोन सिर्फ एक ही है, दैट इज एड्रेनालिन। तो अगर कॉर्टेक्स को कुछ इंज्यूरी हुई है तो एड्रेनालिन के रिलीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। लो कैल्शियम आयंस इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस कम हो गए, तो उसके वजह से कौन सा कंडीशन होगा? टिटनी, अनीमिया, एंजाइना पेक्टोरिस या गाउट। अनीमिया तो रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी होता है बिलो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल जो होना चाहिए आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन का, उससे कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अनीमिया।
angina pectoris, this is acute chest pain, right? Gout is inflammation of joint because of deposition of urate crystals. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है टिटनी. एंड व्हाट इज टिटनी? इट इज prolonged contraction of muscles without relaxation. कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का बट रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे टिटनी. कब हो जाएगा? जब कैल्शियम का लेवल जो है बॉडी फ्लूइड्स में कम हो जाएगा, या फिर whenever there is infection of Clostridium tetani बैक्टीरिया. तो prolonged contraction होगा मसल्स का पर रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, राइट? करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. Let's move on to our next question. Which one of the following pairs is incorrectly matched? Incorrectly matched पता करना है. ग्लूकागॉन बीटा सेल्स से रिलीज होता है क्या? नहीं. बीटा सेल से तो इंसुलिन रिलीज होता है ना? फटाफट लिख लेते हैं. इंसुलिन रिलीज होगा. सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से. कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन रिलीज करता है. इंसुलिन जो है डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है. इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है. यहाँ पे जो है हमें इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछा था, हमें मिल चुका है. इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इज फर्स्ट वन. ओके, ग्लूकागॉन इज रिलीज फ्रॉम द अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स रिलीज करता है ग्लूकागॉन, राइट? सोमैटोस्टैटिन इज रिलीज फ्रॉम डेल्टा सेल्स, यस फॉर श्योर. कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सिक्रीट करता है, यस. एंड इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, हाँ. डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होता है, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? Correct matching pair बताना है हमको. We have 4 options. 2004 का क्वेश्चन है. LH failure of ovulation. हाँ, LH जो है which is known as luteinizing hormone, LH सर्च की वजह से ही होता है ओव्यूलेशन. 2 और भी हार्मोन्स का लेवल बढ़ना चाहिए तब जाके ओव्यूलेशन होता है, लाइक FSH एंड ईस्ट्रोजन एज वेल. याद रखो, नीट का क्वेश्चन है कि ना सिर्फ LH के सर्ज से, LH के इंक्रीज होने की वजह से ओव्यूलेशन होता है, बट इसमें FSH और ईस्ट्रोजन का भी रोल होता है. तो ये तो करेक्ट है. इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस नहीं. अभी हमने डिस्कस किया इंसुलिन के डेफिशिएंसी से तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, इंसिपिडस नहीं, राइट? थायरोक्सिन टिटनी, नो. पैराथायरॉयड हार्मोन डायबिटीज मेलाइटस, नो. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. LH हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, सो व्हाट विल बी अफेक्टेड? ओव्यूलेशन, isn't it? So that was it, dear students. What you are going to do now is you are going to like this session, share this session with your friends, and you are going to subscribe our Infinity Learn NEET channel if you haven't subscribed it yet. Also, you are going to download Telegram app. Telegram में you are going to search for Infinity Learn NEET channel, or you are going to click on the link which is present in your description box. And you are going to join our channel. In our channel, you will get notes, daily updates, assignments. Okay? So don't forget to join our Telegram channel, dear students. Please don't forget to like and share our session and subscribe our channel. So that was it for today. Hope you all have enjoyed our session. I'll come again with more interesting sessions like this. We will cover all the previous year questions from class 11th and 12th. Bye bye, dear students. See you in the next class.